almost 6 minutes have elapsed since we started the power descent operation, and we are still in the rough braking phase with the next 4 minutes to go. And if I look at the velocity that has dropped from the time the power descent operation was initiated, nearly 50% of the orbital velocity has been reduced. So we started with 1680 meter per second. Presently, the Vikram lander is descending towards the lunar surface, and it has a velocity of 760. So we expect in the next 3 minutes, the velocity should come down to something like 146. So on your screen, you can see the plot where we have on the x-axis the downrange, and on the y-axis. Quite substantially now. We are almost maybe in the range of 10 to 20 kilometers. And velocity also is, yeah, I think maybe. So a very close match with respect to the pre-flight prediction. So I think altitude has, Alok has come down quite substantially now. We are almost maybe in the range of 10 to 20 kilometers. And velocity also is, yeah, I think maybe. So a very close match with respect to the pre-flight predictions, and which clearly indicates the 4 throttleable steering engines, which has been basically designed for this Vikram lander for the first time, has been performing extremely well. And as per the plan, the timeline is going very precisely, 7 minutes 34 seconds, maybe another 2.5 minutes to go. And we have almost touched the 630 meter per second. So maybe another 500 meter per second velocity is what we expect to get it reduced. At the same time, if you look at the downrange, it has traveled quite close to the landing site now. Just we are maybe 75 kilometers away from the actual landing site. When the maneuver was initiated, we were almost 600 plus kilometers, and yeah, and quite a velocity. And I think it has been getting reduced quite substantially. The one thing I would like to just mention here, during the descent phase of operation, as I mentioned, the rough braking phase is the real brute force of velocity reduction. And since we are trying to bring an object from an orbiting around the lunar surface to have a touchdown, there is a need for us to reduce the velocity. It's something like braking, and quite eventually the job is being done now. Maybe it's around 450 meter per second, and another 2 minutes plus to go. In fact, I think when we reach an altitude of almost, the target for this particular rough braking phase is to attain an altitude of 7.4 kilometers, when the velocity should have touched almost 146. So maybe another nearly 2 minutes, maybe 1 minute to go. जी हाँ, लगभग एक मिनट की दूरी पर हम लोग करीब जो लैंडिंग साइट है उससे करीब 50-60 किलोमीटर की दूरी पर होंगे, और जो ऊंचाई है वो भी करीब 10 किलोमीटर बच गई है, और इस समय जो वेगमान है वो भी करीब 376 मीटर प्रति सेकंड है। इसे और भी कम करना होगा, इसलिए जो चारों इंजन हैं वो भी अभी तक हम करीब 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब उस समय जो एब्सोल्यूट नेविगेशन फेज है आएगा, जो लैंडर है वो थोड़ा हेलो अच्छे से झुका हुआ होगा, और लगातार मशीन में करना पड़ेगा। इस समय हम सारे वैज्ञानिक, आप अगर देख तो वो लोग कर
देते हो तो चेक्स में जाता नहीं तो। 73.3 हाँ मशीन में डाल के देख लो, मशीन में तो और होते डाउन रेंज जो है करीब करीब बिना उसके भी रहेगा। 18 अकाउंट किलोमीटर का वो डाल दूर देना, पर। अकाउंट नंबर डाल देना, IFC कोड आ ही जाएगा। OTP मांगेगा तो बता देना। ठीक है ठीक है। लैंडिंग साइट से, और इस समय जो इमेजर है उसका डेटा भी डाउन हो रहा है। कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो भी बाकायदा ऑन हो चुके हैं इस समय। देख पा रहे होंगे कि हर वैज्ञानिक लगातार छोटे छोटे आंकड़ों पर नजर बनाए हुए है। और आप सुन पा रहे थे के साथ 2 मीटर प्रति सेकंड की जो वेगमान है वो कर लिया गया है। रफ ब्रेकिंग सिस्टम जो है, रफ ब्रेकिंग जो फेज था वो लगभग अपने अंतिम दौर पे। It's finished. So we have finished the rough braking phase now, because the target for that was 7.4 kilometers and the velocity was nearly 140. So the Vikram lander has successfully completed the rough braking phase, and now we have entered the next phase of operation, which is the absolute navigation or attitude control phase. And this particular event is going to last for nearly 38 seconds, and the 4 throttleable engines are continuously on, and we see the velocity is something like 86 meter per second, and roughly 4.43 kilometers away from the landing site. So all going well. Just awaiting the announcement for completing. Yes, the rough braking phase has been successfully completed, and we have entered the next phase of braking operation, which is the fine braking start, which is going to basically commence from 5-kilometer altitude, and this particular operation is going to last for nearly 96 seconds, wherein the Vikram lander will be reaching an altitude of just 400 meters above the landing site for initiating the vertical descent operations. So we are almost 11 minutes 52 seconds after the descent operation has started, just awaiting the announcement for the हेलो end of fine braking phase. कर रहा हूँ यार, अभी कर रहा हूँ, अभी मेरे पास बाहर होना है। Maybe in another few seconds we should hear the announcement that ठीक the है। fine braking phase of operation has been हाँ completed, हाँ करते हैं। and we expect at the end of this the vehicle to reach an altitude of almost 400 meters. And the velocity right now, if you look at the plot, we have the Vikram lander has a horizontal velocity of nearly 48 meters and vertical velocity of 60 meter per second. जी हाँ, करीब करीब 12 मिनट 30 सेकंड का समय व्यतीत हो चुका है। हम लोग काफ़ी नज़दीक चंद्रमा की सतह पर, और फाइन ब्रेकिंग जो एंड वो है फेज है वो लगभग ख़त्म होने की स्थिति में। 12 मिनट 30 सेकंड का समय व्यतीत हो चुका है। हम लोग काफ़ी नज़दीक चंद्रमा की सतह पर, और फाइन ब्रेकिंग जो एंड वो है फेज है वो लगभग ख़त्म होने की स्थिति में। 12 मिनट 30 सेकंड का समय व्यतीत हो चुका है। हम लोग काफ़ी नज़दीक चंद्रमा की सतह पर, और
data security is at the forefront. Companies come to us with their ideas, and we help then take that into a product. They wouldn't want to work with somebody that they can't trust. Together as a single spacecraft called Chandrayaan 2, and the total mass of Chandrayaan 2 at launch was 3,850 kilograms. As you are all aware, launch of Chandrayaan 2 spacecraft took place on 22nd of July on board India's heaviest GSLV Mark III launcher from Satish Dhawan Space Center at Sriharikota. The launcher has successfully placed Chandrayaan 2 into an elliptical transfer orbit around the Earth. Subsequently, the anti-composite module raised its orbit around the Earth by propulsion system in to the 30 meter lunar per second. So maybe transfer another phase. 500 meter per second Now, if you velocity look at is the what overall we sequence that has expect to happened get. since the Chandrayaan 2 was inserted into the orbit, the Chandrayaan 2 spacecraft was eventually captured into an orbit around the moon, and later it performed almost 4 lunar-bound maneuvers and lowered its orbit to almost 100 kilometers around the Earth. You may be aware, on 2nd of September, which was 5 days ago from where we are today, the orbiter and the lander module were separated from each other. 4 इंच में And the very next day, after the orbiter and कौन सी lander वाली रेंज module की got separated, 1/2 इंच के ना and the lander Vikram module हाँ performed हाँ two हाफ है deboost operations just to move the 7 orbit भी है हाफ And now we have orbit of 10 100 by 100 kilometers to an orbit of 30 kilometers by 100 kilometers around the moon. So as on date, where we are almost 26 minutes away हाँ from हाँ the हो launch. जाएंगे And the 3 की orbiter लाइन लगा module के is देखेंगे तो rotating 10 है at an दोनों orbit of around 100 kilometers around the moon. हाँ And we have the Vikram lander module, which is moving in an orbit of 30 kilometers by 100 kilometers. And since the launch of Chandrayaan 2 on 22nd July, today is the 40th day when landing is expected to take place. So right now we are around 26 minutes away from the start of the most important and crucial powered descent operations. And once this powered descent maneuver is initiated, it's expected to take roughly around 15 minutes for the lander Vikram to make a soft landing on the surface of the moon. नमस्ते, सुप्रभात और आने वाला दिन शुभ हो। इसी संदेश के साथ मैं आलोक श्रीवास्तव अपने वरिष्ठ वैज्ञानिक साथी श्री राधाकृष्ण जी के साथ आप सभी देश विदेश के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम इस समय इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क इस ट्रैक के मिशन कॉम्प्लेक्स से इस बहुचर्चित क्षण का आंखों देखा हाल प्रस्तुत कर रहे हैं। उपलब्धियों के भारतीय आकाश का एक और दैदीप्यमान सितारा चंद्रयान 2 के रूप में परिणति के शिखर पर पहुंच चुका है, जिसमें चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम और उसके अंदर संयोजित रोवर प्रज्ञान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर
दो क्रैटरों मैग्नीज सी और सिम्पेलिस एन के बीच मुख्य संभावित अवतरण क्षेत्र SLS 54 PLS1 जो 70.9027 साउथ अक्षांश या लैटिट्यूड और 22.7811 ईस्ट पूर्व देशांतर या लॉन्जिट्यूड के बीच उतर कर आज भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस अक्षांश और देशांतर
we do for dinner? Let's do pizza. अरे कल ही तो खाया था. Guys, कोई बर्थडे बॉय से तो पूछ लो. My mom loved feeding me. In fact, it was a tradition for my birthday. I used to wait all day for the biryani. We know how much you love biryani. Biryani, a symbol of togetherness in the journey of life. Experience the magical flavors of Dum Safar Biryani and create unforgettable memories with your loved ones. Dum Safar, flavor of shared journeys. आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं डॉक्टर BN सुरेश को, डॉक्टर TK एलेक्स, ये दो महान वैज्ञानिक जो हैं भारत के एक तरह से स्तंभ कहे जा सकते हैं, जिन्होंने रॉकेट में और उपग्रहों में देख रहे हैं डॉक्टर BN सुरेश को, डॉक्टर TK एलेक्स, ये दो महान वैज्ञानिक जो हैं भारत के एक तरह से स्तंभ कहे जा सकते हैं, जिन्होंने रॉकेट में और उपग्रहों में जुटाएगा। और मेरे ख्याल से अगर ये आज सब कुछ सही होता है तो चंद्रमा की सतह पर रॉकेट उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो चुका है और कुछ ही क्षणों में वो हमारे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आ सकेंगे। हमारे उनके स्वागत के लिए हमारे इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक और विभिन्न केंद्रों के हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो चुका है और कुछ ही क्षणों में वो हमारे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आ सकेंगे। हमारे उनके स्वागत के लिए हमारे इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक और विभिन्न केंद्रों के witnessing the arrival of Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has just arrived here at the Mission Operation Complex at ISRO, ISRO's Tracking and Telemetry Command Network in Bangalore. He will be amongst us to witness today's important historic event when Vikram lander will be on the surface of the moon. So on your screen, Dr. K. Shivan, Chairman ISRO. देखा आपने, यहाँ तो लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। अरे सिर्फ यही नहीं, भारत भर उत्सव का माहौल है। Kalyan Jewelers, celebrating 200 showrooms. Visit now for exciting offers. We'll be moving to the dignitaries gallery. प्रधानमंत्री जी का उत्साह देखने लायक, हर छोटी छोटी चीज का बड़ी बारीकी से निरीक्षण करते हुए, चहलकदमी करते हुए धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचते हुए। भारतीय वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए आज हमारे बीच एक बार फिर से मुझे याद आता है जब मार्स ऑर्बिटर मिशन के लिए इसी तरह हमारे बीच आए थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री, और ये दोबारा फिर से सभी से परिचय लेते हुए राधा कृष्णन
इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी, उनके पीछे थे प्रोफेसर के विजय राज, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और इस तरीके से फिर से एक बार उन्होंने डॉक्टर सुरेश जी के सामने उनसे हाथ मिलाया, डॉक्टर के एलेक्स जी, डॉक्टर PS गोयल जी, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी अपना स्थान ग्रहण करते हुए। So the countdown is at minus 12 minutes. So within the next 12 minutes, we have the command that will be issued for starting the descent phase of Vikram lander. Descent phase of Vikram lander, seated in the dignitaries gallery along with some of the other senior officials of gallery, along with as well who are here. Other senior officials gallery we also have some of the other who are here. Prominent and important gallery we also have some of the other. As you would have seen during the coverage, we have a lot of students. As you would have seen during the coverage, we have a lot of students. This basically the students who are here to witness the launch have been selected. This basically the students who are here space quiz competition have been selected based on for the students in the online space quiz competition that was conducted. For the students who are in the range of class 8 to 10 across all the states in India, and finally 2 students from each of the state and union territories have been selected from each of the state to witness this historic lunar landing event along with Honorable Prime Minister. Union territories have been selected to witness this historic lunar landing event along with Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. So today we have amongst us nearly 84 plus school students who are here in the mission operations complex. जी हाँ, आपको याद दिलाता चलूं कि चंद्रमा के लिए भारत का प्रथम मिशन चंद्रयान 1 श्रीहरिकोटा से 22 अक्टूबर 2008 को सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया था। अंतरिक्ष यान चंद्रमा की रासायनिक, खनिज विज्ञानी एवं प्रकाश भूविज्ञानी मानचित्रण हेतु चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। अभियान के इस मुकाम पर उपयुक्त होगा अगर हम उन दिनों की भी याद कर लें जब इस उपग्रह को GSLV Mark 3 M1 द्वारा 22 जुलाई 2019 को 14:43 पर 973.7 सेकंड की उस उड़ान ने चंद्रयान को 181.617 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा था। मैं प्रार्थना करूंगा कि अभी आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग के जरिए उसी तरह की उन्हीं घटनाओं की याद दिलाई जाए ताकि हम यहाँ से और आगे बढ़ सकें। इस समय हम करीब 11 मिनट की दूरी पर ये एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग आपके लिए, जिसमें हम ये कोशिश करेंगे कि आपको याद दिला सकें कि कैसा था वो प्रक्षेपण। We have the view of the Mission Control Center at the Mission Operation Complex. By 39,000 kilometers around the Earth. So once the orbit of the Chandrayaan 2 was 39,000 kilometers with a perigee of 170, as you can see on your screen, using its propulsion system, it performed 4 earthbound maneuvers
to raise the orbital altitudes in preparation to enter the lunar transfer trajectory and then go to the lunar orbit. So right now what you're seeing is the orbit of Chandrayaan 2 being raised around the Earth, and once this is done, the spacecraft has entered the lunar transfer trajectory phase and it is proceeding towards the moon's orbit, and very shortly you will see the Chandrayaan 2 spacecraft has been captured in the sphere of influence around the moon, and it will start orbiting with an altitude of almost 18,000 kilometers by 120 kilometers. And then subsequently, using the propulsion system of the Chandrayaan 2, which is the orbiter module, the orbit was brought down to an altitude of almost 100 kilometers. In the process of bringing it down from 18,000 to 100 kilometers around the moon, it performed nearly 4 orbital descent maneuvers. And you can see now the orbiter and the lander Vikram will get separated, and eventually the Vikram lander module, using its propulsion system, has brought down the altitude to something like 30 kilometers by 100 kilometers. So as I have mentioned repeatedly, the Vikram lander module is presently in an orbit of around 30 kilometers by 100 kilometers. 30 kilometers is the minimum height above the lunar surface where the powered descent operations will be starting. And I think we are very close to the event when the Vikram lander thruster will be initiated. Roughly around 6 minutes to go before we start the power descent operations. जी हाँ, हम करीब करीब 7 मिनट की दूरी पर जहाँ से डिसेंट शुरू होना है, जहाँ से उस घड़ी की शुरुआत होगी जब हम लगभग 35 किलोमीटर की पेरिजी की ऊंचाई से हम उतरना शुरू करेंगे। जिन दर्शकों ने अब इस अभियान को शुरू से फॉलो नहीं किया है, उनकी जानकारी के लिए संक्षेप में बता दूं कि प्रक्षेपण के पश्चात 24, 25, 29 जुलाई और 6-8 अगस्त को पृथ्वी की कक्षा में 5 मैन्यूवर्स किए गए, जिसमें तकरीबन 508.4 किलोग्राम प्रणोदक का कुल 3604.254 सेकंड तक प्रज्वलित कर कक्षीय परिवर्तन किया गया, जहां कक्षा उत्थान किया गया। इसके पश्चात 13 अगस्त को ट्रांस लूनर इंजेक्शन TLI के दौरान 166.8 किलोग्राम प्रणोदक की खपत कर 158.309 मीटर प्रति सेकंड की वेग वृद्धि की गई और चंद्रयान 2 को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में स्थानांतरित कर दिया गया। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर मिशन के लंबे अतिपर्वणीय पथ पर एक ऐसा बिंदु आता है जो चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र के अंदर होता है। इसे लूनर ऑर्बिटल इंसर्शन या LOI कहते हैं, और इसी बिंदु पर भू आदेश के द्वारा कक्षा की दिशा में परिवर्तन कर उसे चंद्रमा की दीर्घवृत्तीय कक्षा में पहुंचा दिया जाता है। फिर 20, 21, 28, 30 अगस्त और 1 सितंबर को 745.04 किलोग्राम प्रणोदक को कुल 4422.809 सेकंड तक प्रज्वलित कर चंद्रमा की निम्न कक्षा में प्रवेश करा दिया गया। इस समय पेरिलून लगभग 120.5 किलोमीटर और एपोलून 126.1 किलोमीटर प्राप्त कर लिया गया है। आप अपने स्क्रीन पर इसरो उपग्रह केंद्र के UR राव उपग्रह केंद्र के विभिन्न वरिष्ठ वैज्ञानिकों का बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हुए देख पा रहे हैं, क्योंकि इस समय हम केवल 5 मिनट की दूरी पर हैं और हर छोटी बड़ी घटनाएं जो भी इस समय लगातार घट रही हैं उनका बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। और जिस समय हम करीब 1:38 सुबह के हम चंद्रमा के उस बिंदु पे पहुंचेंगे जहां ऊंचाई करीब 35 किलोमीटर होगी, उसी क्षण में ऑर्बिटर भी जो होगा वो बिल्कुल उपग्रह के ऊपर होगा, इस तरह से ताकि हम उसके चित्र प्राप्त कर सकें। So minus 3 minutes 53 seconds before we start the power descent operation. Just to give a quick update on the way the total power descent operation for the Vikram lander would be carried out. The descent operation would, as you can see on the screen, we are at 3 minutes to go before we start these operations. So Vikram lander would commence from an altitude of 30 kilometers.
38 minutes Indian Standard Time. As I mentioned, we are just less than 3 minutes now. And this entire power descent operation will be carried out in 4 different phases of operation, namely the first phase, which is the phase referred as rough braking phase, will bring the spacecraft from 30 kilometers to an altitude of almost 7.4 kilometers. The second phase after the rough braking phase will be attitude and absolute navigation control phase, which will enable the spacecraft to travel from 7.4 to 5 kilometers. And then immediately we will have the third phase of operation, which is the fine braking phase, where we bring down the spacecraft terminal descent phase, where the Vikram lander will be brought from an altitude of 400 meters to 100 meters to 60 meters to 10 meters and finally the touchdown. So as we go through these operations, as I mentioned, it will be a 15 minutes of descent operation. Once the activity is initiated, we will be bringing you some of the flight parameters and the status, how the total operations are going on. So each of these phases during the power descent are very critical and important in its own way, as it has a very specific objective and the goals to be achieved during the entire phase of operations. So maybe another 1 minute, 19 seconds to go. The further update as far as the descent operation is concerned, the Vikram lander has 4 main propulsion engines, each generating a thrust of nearly 800 newtons. And out of these 5 main engines, the 4 engines are throttleable liquid engines, which means we will be able to regulate the thrust of the engine, like increasing the speed or decreasing the speed of the engine to achieve the required deboost velocity. Another 48 seconds to go before this deboost or firing of the engines. The 4 thruster engine, throttleable engines are carried out. जी हाँ, थोड़े तनाव भरे क्षण जरूर हैं, क्योंकि हम बेहद करीब 32 सेकंड के जब विक्रम को धीरे धीरे उतारा जाएगा नीचे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे उतरते समय उसके वेग मान को कम किया जा सके, जिसे हम रफ ब्रेकिंग फेज कह सकते हैं। और इस रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान हम जो उसमें लगे हुए 8 थ्रॉटलेबल इंजन हैं, जिससे उसके प्रणोद बल को कम किया जा सकेगा। ऐसे 4 इंजन 4 कॉर्नर पे लगे हुए हैं, 4 कोनों पे लगे हुए हैं, और ऐसा ही एक 800 न्यूटन का इंजन जो है बीच में लगा हुआ। और बिल्कुल हम करीब इस समय विक्रम डिसेंट के स्टार्ट कर दिया गया है, और रफ ब्रेकिंग जो वो है घड़ी है, वो बहुत ही नज़दीक होगी। इस समय हम धीरे धीरे अब उसकी गति को कम करना शुरू करेंगे। Yes, the descent phase of operation for the Vikram lander has just been initiated with the firing of the 4 liquid engines, which I was mentioning, the 4 throttleable engines. The activity has just started, and right now we are at 35 seconds since the engines have fired. And just to give an update, the Vikram lander, when it was in an orbit of around 30 kilometers, when the descent operation started, it had a velocity of nearly 1,640 meters per second. So what we are going to do through this entire phase of 15 minutes of operation, when the power descent will be done, is to make this orbital velocity of the Vikram lander from 1,640 meters per second to almost 0 meters per second, so that the spacecraft could land on the surface of the moon. So the activity has just initiated. As you can see on your screen, the view of the Mission Control Center, with Chairman ISRO and Director of URSC, and Dr. Suresh briefing the Honorable Prime Minister about the flight event that are going on. So the time elapsed is almost 1 minute 28 seconds. जी हाँ, धीरे धीरे गति कम होती हुई 1507 मीटर प्रति सेकंड हो चुकी है, जबकि हमने 1630 मीटर प्रति सेकंड की गति से प्रारंभ किया था। और हर घड़ी की, हर क्षण की जो जानकारी है वो प्रधानमंत्री को पहुंचाई जा रही है। और इस समय हम करीब 1 मिनट 52 सेकंड का समय व्यतीत कर चुके हैं, और वेगमान लगातार घटता हुआ। और यही उद्देश्य भी हमारा है कि धीरे धीरे जो रफ ब्रेकिंग है उसके दौरान चारों जो इंजन हैं, उन चारों 800 न्यूटन वाले इंजन जो भारत ने पहली बार विकसित किए हैं, ये पूरी जो प्रणोद प्रणाली है ये पहली बार विकसित की गई है। और इस प्रणाली के चारों इंजन लगातार फायर करते हुए, प्रज्वलित होते हुए और लगातार वेगमान घटता हुआ।
So almost 2 minutes 20 seconds. And we expect this rough braking phase, which was just initiated, to last for nearly 10 minutes. During which time the velocity, the orbital velocity which the Vikram lander possessed of the order of 1,640 meters per second should reach to something